जय नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे खोल ले नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे नामयमनि उदित हाय भक्त गीत श्यामे नामयमनि उदित हाय कृष्ण नामयमनि उदित हाय भक्त गीत श्यामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन अमीय धारा बरिसे घन श्रवण जुगले गिया अमीय धारा बरिसे घन अमीय धारा बरिसे घन श्रवण जुगले गिया अमीय धारा बरिसे घन भक्त गण सघने नाचे भरिया अपन हिया भक्त गण भक्त गण सघने नाचे भरिया अपन हिया नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका माधुरीपुर आशव पोषी माताए जगत जाने माधुरीपुर आशव पोषी माधुरीपुर आशव पोषी माताए जगत जाने माधुरीपुर आशव पोषी माताए जगत के हवा कादे के हवा नाचे के हमाते मोने मोने के हवा कादे प्रेमे के हवा कादे के हवा नाचे के हमाते मोने मोने हवा कादे के हवा नाचे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन
পঞ্চবদন নারদে ধরি প্রেমের সঘন রোলা পঞ্চবদন নারদে ধরি পঞ্চবদন নারদে ধরি প্রেমের সঘন রোলা পঞ্চবদন নারদে ধরি কমলাসন নাচিয়া বলে বল বল হরি বল 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 নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার মন নামে নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার মন সহস্রানন পরম সুখে হরি হরি বলি গায় সহস্রানন পরম সুখে সহস্রানন পরম সুখে হরি হরি বলি গায় সহস্রানন পরম সুখে হরি হরি বলি নাম প্রভাবে মাতিল বিশ্ব নাম রস সবে পায় নাম প্রভাবে মাতিল নাম প্রভাবে মাতিল বিশ্ব নাম রস সবে পায় নাম প্রভাবে মাতিল বিশ্ব রস সবে নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার মন নামে নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার মন শ্রীকৃষ্ণ নাম রসনে স্ফুরি পুরালয় আমার আছ শ্রীকৃষ্ণ নাম রসনে স্ফুরি পুরাও শ্রীকৃষ্ণ নাম রসনে স্ফুরি পুরাও আমার আছ শ্রীকৃষ্ণ নাম রসনে স্ফুরি শ্রীরূপ পদে যাচয়ে ইহা ভকতি বিনোদ দাস শ্রীরূপ পদে শ্রীরূপ পদে যাচয়ে ইহা বিনোদ সেবক দাস পদে যাচয়ে ইহা নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকার মন নামে নারদ মুনি বাজায় বীণা নাময় মণি উদিত হায় ভকত গীত স্বামী উদিত হায় ভকত গীত স্বামী নারদ মুনি
বাজায় বিনা রমন নামে নারাজ মুনি বাজায় বিনা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি বল 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 জয় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसश्रियां सभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरी स्फुरतु नः शचीनन्दन ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् शरणं
वृत्तार्थियं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गकमुपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वरापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाष कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वेणुं कनन्तम् अरविन्ददलायताक्षं बर्हावतंसम् असितं मृदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दम् आदिपुरुषम् तमहं भजामि। अङ्गश्यामलीमच्छटाभिरभितो मन्दिकृतेन्दुवनम् जाड्यं जागुररुचिशं विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यविलासिनं हृदि लसद्धामाविरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আপনি পড়ুন। হ্যাঁ আপনি পড়ুন। হ্যাঁ পড়ুন না। আরে আজকে আপনি হ্যাঁ আজকে আপনি কি পড়বো? হিন্দি লেখা আপনার। হরে चेतदर्पममार्जनं भवमोहदावाग्निर्वापनं श्रेयाकैरवचन्द्रिकवितरणं विद्यावधुजीवनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं परं विजयति श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्।
Sri Chaitanya Mahaprabhu what is his special gift for us? This is stated in this Sikhastava Shloka. In 8 verses, he has explained that thing. Chetu darpanam arjanam bhavamahadavagni nirvapanam sriya koirava chandrika vidaranam vidyavadhu jivanam. তারপরে কি আনন্দাম বুদ্ধিবর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণামৃতাস্বাদনম সর্বাত্ম সমাপনম পরম বিজয়তি শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম. Why did he praise this Sri Krishna Sankirtanam? Sri Krishna Sankirtanam is the best. This is his inward teaching. There is no parallel to this. Parang Vijayati Sri Krishna Sankirtanam. Let it be mostly successful. Sri Krishna Sankirtanam. There is no consolation in Viraha stage, but Sri Krishna Sankirtanam is the only thing. He appreciated this and instructed the human beings that this is the best of all the goods, the good things, of all the devotions. Sri Krishna Sankirtanam Param Vijayati. And he remarked, it is suitable for all classes of devotees. From the worst to the best, it is suitable. And the best position can be had by this Sri Krishna Sankirtan only. Peacefully, easily, and most precisely. It will give the best position in the spiritual world. This Sri Krishna Sankirtan will give the best position in the world. By this chanting, by the kirtan, this kirtan of the name of Sri Krishna and the glories of Sri Krishna, we can possess the highest position. For the lowest devotees who are always thinking of the worldly pleasures, what is stated? Their mind is full of their thoughts, worldly pleasures.
it should be removed first. For this reason, he uttered Cheta Darpana Marjanam. This is to be done first. Chitta Darpan should be rubbed, cleaned. First of all, it is necessary. By which process it will be cleaned? By this kirtan. Kirtan is enough, more than enough, to clean the chitta darpana, can mirror up my chitta, man, buddhi, ahankar, chitta. These are the four sections of mind. Chitta, it should be cleaned fast. Without cleaning this chitta, we cannot accept, we cannot understand, we cannot have the position to the highest prema, to attain the highest prema. It is not at all possible. We are thinking always for the pleasure of our senses. How the pleasure of the divine masters and how the pleasure of Lord Krishna and his consorts and the gopis and Srimati Radharani can be seen there? No. First of all, it should be cleaned. And by the process of Sri Krishna Sankirtan, he has from beginning to end explained it, but very carefully. Ashrisavapadaratan pinustumam adarshanat manmahatang karutu va yatha tathava vidadhatu lampatu matprananathastu saiva napara. This is the conclusion. Who can attain this stage without cleaning his chitta? First of all, it is necessary. But this Sankirtan will clean this chitta. It is only suitable and best process to clean, to get rid of these worldly thinking, worldly enjoyments, material enjoyments of our senses. When the prema, bhakti will be attainable, when the mind is engaged in material happiness, material pleasures, will it be possible in that mind we can understand anything of prema? So in this class, we should not try to understand that prema. It is useless in that position. But it is not prescribed. By the trial of possessing prema,
and thinking the situation and behavior of the premic devotees will get rid of, will make our chitta clean. It is not mentioned there. By the Krishna Sankirtan only. Cheto darpana marjanam bhavamoha davagni nirvapanam. Secondly, it is uttered bhavamoha dav agni. Do we feel it is fire? Unless and until we feel it as a fire, why shall I try to get rid of it? हम लोग का जलन होता है, ऐसा हम लोग का मालूम है कोई का? हम लोग जल रहा है ये दुनिया में, जलता है, मर जाता है जलते जलते, ऐसे हम लोग का कोई का मालूम है? बहुत अच्छा है, रुपया है, पैसा है, मुकाम है, बहुत से खाना पीना का सुव्यवस्था है, तो कौन भगवान के लिए प्रेम भक्ति के लिए कोशिश कौन करेगा? First of all, let him understand, realize that we are burning in birth and death system. We are suffering eternally. Why should we give up that habit? If we think that we are enjoying very much here, Chahina moditami sundara bhuvane, so long we think this world is very fine and happiness, full of happiness, why should I try to live it? Bhavamahadabhagni nidvapanam. Who are realizing that we are suffering by Dabagni. It is so dangerous for us to take birth in this world. Bhavamaha Dabagni. तब ना हम लोग जब समझेंगे जो हम लोग जल रहा है, तब ना कैसे हमारा ये जलन बंद हो जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे। कौन उपाय से हमारा ये अग्नि निर्वापित होंगे? कृष्ण संकीर्तन से वो भी होगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. Shri Krishna Sankirtan can make us, it can rescue us from this Davagni, from this fire. Param Vijayati Shri Krishna Sankirtanam. Cheta Darpanam Arjanam Bhavamoha Davagni Nirvapanam. Shrek Koirava Chandrika Vitaranam. Then we can understand. By this Shri Krishna Sankirtanam only. When we will be free from this bondage of Maya and freed from Davagni and rescued from Davagni by this chanting will then reveal His
joyful, pleasureful feature before us. Like the smoothing rays of moon, this Sankirtan will appear before us as the very sweet and smoothing rays of the moon. Sirak Kairava Chandrika Vitaranam. But that rays belongs to the Param Mangal, the best good of us. The good, best good is expressed is tulana kara compared with the moon. The moon is so smooth and pleasuring, and that best will be then realized. Sirak Kairava Chandrika Vitaranam, Vidya Vadhu Jivanam. Wisdom is Vidya. And that is the true result. That is the life of knowledge. Vidya Vadhu Jivanam. By that knowledge, we can understand that Sri Krishna Sankirtanam is the best knowledge. Vidya Vadhu Jivanam. If by knowledge we do not understand the Sri Krishna Sankirtanam is the best result, that knowledge is not knowledge. That is not admirable knowledge. Vidya Vadhu Jivanam. Sarvatma Snapnam. One will be immersed in that Sankirtanam, or in the ocean of joy. He will sink down by this Sankirtanam. Anandam Buddhi Vardhanam. The ocean of pleasure, joy, is increased by this Sankirtan. Anandam Buddhi, आनंद का समुद्र, समुद्र बढ़ जाता है, वृद्धि प्राप्त होता है. किसका आनंद? अम्बुधि किसको कहा जाएगा? आनंदाम्बुधि किसको कहा जाएगा? आप ही बतलाइए. गुरु जी ने बतलाया कृष्ण जी को आनंद. वाह वाह, सब आया जी पर, अब आ गया कृष्ण पर. ऐसे ही बताए हैं. एक तरफ हुआ था ऐसा डिस्कशन, हम वहां सुने. जीव का जो है वो अम्बुधि नहीं है, क्षुद्र है. जीव का भी आनंद असीम. लेकिन गुरु जी कहे
पिछल्ला को पास एक गांव में ऐसा ही डिवोटीज asked him. Then he called. I remembered it very well. Let it be, otherwise I do not know whether it is, which is true. But I have heard this from the mouth of our Divine Master. क्या क्या सुना? कृष्ण आनंद जेटा सैटी की आनंदाम्बुधि बोला। यहाँ पर कैसे होगा? सब तो जी पर ले आ रहे हैं। वो हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो फिर कैसे गुरु? वो हम जानते नहीं, हम पूछे भी नहीं, उन्होंने जो कहे हैं वो हम बोलते हैं। अरे गुरु जी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। वो हम जानते नहीं होगा, इतना दूर को हम जाने का साहस नहीं है। जो हम सुने हैं ये हम बताए हैं, आप जो विचार करें वो करिए। आप जो करें ठीक। Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam. In every step we can realize Purna and Amrita. What sweet, the sweetness is tasted in every step. Let this Sri Krishna Sankirtanam be praised highest in highest way. Vanchakalapatarubhasya kripa sindhubhaya pasitanam pavane bhuvaya. बहुत जल्दी कर दिया। Yes, the rest is for you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 He Krishna 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 He Krishna 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 He Krishna 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 He Krishna Keshava Krishna Keshava Lakshman Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Paimam Ram Rava Ram Rava Ram Rava Ruksamanu Ram Rava Ram Rava Ram Rava Ram Rava Ram Rava Pahimam Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Lakshman Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Hori Bol Hori Bol Hori Bol Hori Bol Hori Bol Hori খাবো না নেই তো ইচ্ছে এক পাঁচ চাল একটা উঠছে খাবো না নেই তো ইচ্ছে এক পা চাল একটা উঠছে চাল একটা উঠছে মাঝখানে বলবেন না আপনি সব বলেননি ঝেড়ে নিয়েছে ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी हम लोग ऊंचा गांव जाएंगे। ये ललिता जी का जन्म स्थान है।
वहीं पर गोपियों ने कृष्ण के साथ में ललिता जी का विवाह रचाया था। वहां पर अलता पहाड़ी है, सखीगिरी पर्वत है, जहां पर कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई थी, गोपियों की लीलाएं हुई थी। वी आर नाउ गोइंग टू ऊंचा गांव, द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमती ललिता। ऑल्सो देर इज सखीगिरी पर्वत, where there is a Alta Pahadi, where gopis made the marriage of Lalita with Krishna. Also there are Alta Pahadi, where still now we can see the sign of red lake. Yeah. We'll go there and see. It took place more than 5,000 years, but still if anyone give water, it will come out like new one. वहां पर नया नया सा दिखेगा। वहां से हम लोग पीली पोखर होते हुए, जहां पर विवाह नहीं होने पर यशोदा मैया ने राधा जी का हाथ पीला कर दिया था, लज्जा के मारे जहां उन्होंने धो दिया था वो पोखर ही पीली हो गई। वी विल गो टू पीली पोखर। पीली मीन्स येलो पॉन्ड। इट शोज दैट श्रीमती Yashoda wanted to give the marriage of Krishna to Radhika, with Radhika. So he gave haldi, turmeric, haldi in the hands of Radhika, that I have accepted you as my daughter-in-law. But actually marriage was not done, so Srimati Radhika was so shamed. She was so shy that she washed her hands in that pond and it became yellow. We will go also there. And then in evening our session will be from 4 to 6. And then tomorrow in morning we will go to Nandagaon. Today is time is over. About it is 7. So I will only tell one thing. There is a kirtan of আরে ওটা কোথায় রে বলেছিলাম আজকে সকালবেলা কীর্তন করলে যে করে মহাশয় হ্যাঁ কোথায় पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज has explained चेतो दर्पण मार्जनम। I want to tell only one thing in that day. He explained that Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam. I will explain all after all. But Jeev is my own statement. Jeev is अब घबरा क्यों रहे, डर क्यों रहे? डर मत, डरिए मत, मैं आपको मारूंगा नहीं। आप उल्टा रास्ता में चलते हैं इसलिए आपको सावधान करते हैं। He always fears from me, always afraid, always afraid. But I am not shooting you. Jeev is, she means soul.
is very particle. पार्टिकल, ठीक है ना? जीव अणु है, यह बात ठीक है, किंतु इसका धर्म अनंत है। जीव अणु होने पर भी इसका धर्म अणु नहीं है। अणु कब तक है? जबकि कृष्ण जी के और राधा जी के चरणों का आश्रय नहीं करता, तब तक इसका धर्म भी क्षुद्र है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसा कहा है, हमारे सब आचार्यों ने इसको माना है। ये मेरी बात नहीं है, किंतु देखने में ये अच्छी युक्ति युक्त होती है। It seems that it is very good explanation of Srila Bhakti Vinod Thakur that even Jeev is a very small a particle of Krishna, but its dharma, his dharma ne kya hai? Nature. His nature is not a nature and character is to serve Krishna and Srimati Radhika, and that prem is endless. Krishna can sink in that prem. Even Krishna, like a creeper, he cannot go up if there is no support. Yes, but if a tree will be support, then creeper will go on the top of tree. Also tree, it can climb. So Jeev is Anu, but yet his characteristics and his prem is endless like ocean. Krishna can take bath in that also, and he will be pleased. So here Anandambudhi Vardhanam, not of Krishna here it is told, because it has told that the माने फल उसका नाम संकीर्तन का ये फल है, रिजल्ट ऑफ नाम संकीर्तन, रिजल्ट ऑफ नाम संकीर्तन। दिस 7, ये 7 उसके फल होते हैं। नाम यदि शुद्ध रूप में कोई करे तो ये फल किसको होगा? कृष्ण को फल होगा कि जीवों को होगा? ये जीवों के लिए। कृष्ण का चित्त दर्पण मार्जन नहीं होना है। क्या इसके बाद चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम, इट विल बी ऑफ जीवास हु आर कंडोशन सोल। श्रेया कर्म चंद्रिका वितरणम, जीव का ही सेवा और चंद्रिका वितरणम होगा। भगवान का सेवा तो है ही है, ऑटोमेटिकली है। और श्रेया का विद्या बधु जीवनम, विद्या बधु जीवनम में ये जीव का जो विद्या, व्हाट विद्या? नॉट नॉलेज हियर। क्या जीवन होगा? विद्या इज भक्ति विद्या, एंड देन भाव भक्ति, एंड देन प्रेमा भक्ति, एंड दिस आर क्या एसेंस ऑफ दैट विद्या is Mahabhav, and Mahabhav is Srimati Radhika, and Radhika Badhu Jivan is Krishna, Krishna name. When she feels separation, as Pujyapad Maharaj told, then only one name is उनका आधार रहता है, shelter, base, only the support, basic support. हाँ, उस समय नाम ही उनका सहारा रहता है। नाम के द्वारा जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा स्वस्वदत्रहि दैतदीक्षता विक्षुतावका त्वयिधिता सब त्वं विचिन्वते। उस समय में उनका एकमात्र कृष्ण नाम ही सहारा रहता है।
इसलिए विद्यावधु जीवनम, जीवों के लिए भी, जीवों के भक्ति का जीवन स्वरूप यह नाम है। आनंदाम्बोधि वर्धनम, जीव के हृदय में अभी आनंद सुप्त है। क्यों? कृष्ण की सेवा के बिना, जुगल सेवा के बिना वो आनंद नहीं रह सकता। किंतु नाम के कीर्तन करते करते, शुद्ध नाम करते करते, भाव के साथ में नाम करते 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 जीवों के हृदय में प्रेम का आनंद क्या उच्छलित होता है। जीवों के हृदय में आनंदाम्बोधि वर्धनम, उसको देकर के कृष्ण को भी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके भी हृदय में आनंद बढ़ता है। और सर्वात्म स्नपनम, जीव अंत में उसका क्या, इतना प्रेम हो जाता है कि उसमें जीव सदा के लिए डूब जाता है उस आनंद में, उससे फिर निकलने की जरूरत नहीं होती। ये कहां है? गोलोक वृंदावन में कृष्ण के लीला तरंगों में वो सदा के लिए डूब जाता है, कभी माया का स्पर्श नहीं होता, आत्यंतिक दुख निवृत्ति वहीं पर हो जाती है फॉर एवर। आनंदाम्बोधि वर्धनम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मा स्नपनम, परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। बट हु इज टेलिंग दिस? हु इज टेलिंग? चैतन्य महाप्रभु जी। हुई चैतन्य महाप्रभु, हुई चैतन्य महाप्रभु कौन है ये? पीत बरन कलिपावन गोरा, पीत बरन, ये कृष्ण पीत बरन नहीं है, हैं? नहीं है। तो ये गौरचंद्र कौन है? जिन्होंने भीख मांग ली है। किस चीज की भीख मांगी? राधे जू आप कृपा करके कुछ दिनों के लिए, 48 वर्ष के लिए इस जगत के लिए आप अपना सौंदर्य पीत बरन और अपना भाव हमें दे दीजिए। राधा जी ने पूछा, जी क्या करेगा हमारा लेकर के? Understand? The black person went to Srimati Radhika and folded his hands and told, I want to beg one thing from you. Srimati told that, what you want? He told that, I want your beauty, golden beauty. Complexion. And especially your mood. What mood? Mahabhav mood. What will you do? But I cannot give it forever. I will give it for some time. What will you do? I will go to world and I will give some prem, and I will also taste all that mood that you have. And in that mood I will test how you are beautiful. Krishna is beautiful. How I am beautiful. So here Krishna begged the mood and also the beauty of Srimati Radhika, and then he became Gaur. So Krishna is telling in mood of Srimati Radhika. Now Krishna is not there, because Krishna mood is not there. So Srimati Radhika is there. So Srimati Radhika is telling Cheto Darpan Marjanam for Jeev. No? So he is doing Krishna Kirtan. But when Krishna will do Kirtan, then what he will tell? This is the prayer of Krishna, Cheto Darpan Marjanam. And when Krishna will be in his mood
of Krishna mood, then he is telling that Narottam Thakur is telling here, Radhika Charanashray, je kare she mahashay, tare mui jayu balihari. Krishna is telling from the mouth of Narottam Thakur. Actually, Krishna is telling here. Radhika Charanashray, je kare she mahashay. Who is mahashay? Who is mahashay? कौन महाशय है? राधिका जी के चरण का आश्रय। वो एक महाशय तो वो है नंद बाबा। वो क्या है श्लोक? नंदा की मां करोत ब्रह्मण श्रेयो महोदयम महोदयम अहोभाग्य नंद को नारे महोदयम आई एम टेलिंग। तो महोदय इसी में है। तो जो कृष्ण का चरण आश्रय करता है वो तो महोदय है ही है, किंतु उससे यहां पर ये भी कह रहे हैं राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय तारे में जाऊ बलिहारी। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, जय जय राधा नाम। कृष्ण इज टेलिंग दैट जय जय राधा नाम। ये राधा नाम जय युक्त हो, जय युक्त हो। वृंदावन जारधाम, वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड इस जारधाम। I shall forget. Finished. Very. कृष्ण सुख विलासेर निधि। राधा नाम कृष्ण विल sink in the ocean of prem of Srimati Radhika. So Radha Nam is topmost. कृष्ण सुख विलासेर निधि। जवाब हम भूल जाएंगे। अब डरिए मत, अब भीष्म पितामह जी जैसा सो जाइए। यू शुड लाई डाउन लाइक भीष्म पितामह। हम उसका जवाब देंगे। अभी नहीं, कल देंगे। हम तो भूल जाएंगे। अरे यदि कल्याण चाहते हैं तो राधा राधा नाम करिए। जिसको आपके आराध्य कृष्ण भी राधा राधा नाम करते करते भूल जाते हैं। अच्छा, अब मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी 1 मिनट चुप रहिए। राधा 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 राधे राधा, हाँ ये देखो। हरे गौ प्रमाण राधा नाम से कहवा दिया। अब हम लोग अभी चल रहे हैं। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते थे तो जसोदा मैया जब दूर जाते थे तब तो कुछ घर में खिला देती थी सवेरे, और निकट वन में चारण करने जाते तो उनके लिए बांध करके दे देती थी। When Krishna used to go to cow grazing with all the cowherd boys, if in near forest he used to go, then nothing to take. उस समय में उनको घर में 9 बजे तक खिला करके भेजती थी, जो शाम तक आ जाएगा। He will return at about 3 or 4. So, but when Krishna used to go to very far forests, बहुत दूर के वनों में जाना चाहते थे। आप थोड़ा सा बोल देंगे ना? बहुत दूर के जंगलों में जाना चाहते, तो जसोदा मैया घर में थोड़ा सा खिला देती थी, बहुत थोड़ा सा। कब? बहुत जल्दी से। और दिनों में पूर्वाह्न में जाया करते। आज जरा सवेरे जा रहे हैं, कहां जाना है? काम में वन में या दूर। तो वैसे ही आज हम लोग अभी टिफिन दे देती थी। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊंचा गांव। यहां से करीब करीब ये 1.5 मील, 1 मील 1.5 मील होगा, अधिक नहीं होगा, 1.5 मील। कीर्तन करते करते हम लोग आसानी से वहां जा सकेंगे, और वहां पर दर्शन करके हम लोग 11 बजे के अंदर में भेजने की चेष्टा करेंगे।
इसलिए अभी आप लोग तुरंत वहां जा पहुंच जाइए। जसोदा मैया ने खीर बना करके रखा है। जसोदा मैया हैज प्रिपेयर्ड खीर एंड यू कैन गो देयर and in 15 minutes you can take and be ready, we will go. यदि कोई बूढ़ा है आदमी नहीं जा सकता तो यहाँ पर कोई वाहन मिल जाएंगे, उसके द्वारा जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान है, इसलिए हम लोग दर्शन करके आएंगे। बोल दीजिए अभी तुरंत। महाराज is saying that Krishna used to go for cow grazing. These were two types of his visits. When he used to go to the nearby distances, at that time he used to go little later, and at that time Yashoda Maiya used to give him full prasad at home. Yes. Because he is going for a nearby distance, and after very short time he will come back. But when he used to go at long distances, say Kamevan and all, naturally he will have to leave his home earlier. So earlier there is no question of full prasad. She used to give him small prasad to eat at the place, house, and then full tiffin was prepared and given to him with him. And we have seen that when we went to Kamevan, we found that place, Bhojan Sthali, where Krishna used to take prasad. Because that prasad he used to carry with him in his tiffin, which was given by Yashoda Maiya. So today we are going, Maharaj, दूर जा रहे हैं या पास जा रहे हैं? दूर, बहुत दूर। So today we are going at distance. So Yashoda Maiya is giving small prasad here before we leave, because we have to leave quickly. And Maiya is inside. और कर दीजिए जैसे जो लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ वाहन मिल जाएगा, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ से उस वाहन में थोड़ा सा चले जाएंगे और चले आए, किंतु अधिक दूर नहीं है, सहज में हम लोग जा करके आ सकते हैं। It's not too far up. Maharaj was saying 1.5 mile. 1.5 mile means it is about 3 or 4 kilometers. No. 2.5 kilometers. 2 kilometers. 2 kilometers. 2 kilometers. And those who are old cannot move, they can hire a rickshaw and something like that. They can find it out here. बस गौर प्रमानंद। हरे कृष्णा हरे की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो राधा कुंडावारी की जय 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 सब पानी पानी हो गया है राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय विश्वभानु दुलारी की जय 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 विश्वभानु दुलारी की जय जय बोलो हरे कृष्ण हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare
big hand back. Go to. ठाकुर जी रखे थे। Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare Ram 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 Gracias.
Be careful. The people want Krishna Padakama Manalo Bhive Charama Sharana Shri Radha Krishna Padakama Mana Chamanelo Chiradina Kamale mana chamon lo bhive charana sharana Shri Radha Bhakti Karadana भक्ति नवाली ना करायो पेक्षा भक्ति नवाली ना करायो पेक्षा राधा कृष्ण पद कमले मन जमने लोभिवे चरम शरण चंचल काले रसागरे धाया Gokul is birthplace. Vrindavan, Radhakund, Shyamkund are played pastimes, playing pastimes. They are more superior. So I think that this place is more superior than Uchagaon. Here lakhs and lakhs gopis used to assemble here and play in various ways. Once they were playing here, Krishna came at once suddenly. कृष्ण यहीं पर गोपियां जब खेल रही थी सखीचोरी पर्वत पर, तो कृष्ण यहीं पर आए। कृष्ण को देख करके सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। भांडीर वन में गोपियों ने राधा जी के साथ में कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। इन भांडीर वन, वी हैव हर्ड, इन भांडीर वन all the gopis made marriage ceremony there, and the clothes of both
were binded together as it is the rule and regulation in marriage. दोनों का गांठ बंधन होता है. When Radhika and Krishna were sitting in Bhandirvan, Gopis suddenly they binded Pitambar in the bell of Srimati Radhika. And their marriage ceremony was done. Here, when the assembly of Gopi was here, playing so many playings, at once Radhika told to Vishakha and Chitra, Champaklata, Tungavidya and all others, something in their ears. And there, suddenly, Krishna and Lalita were sitting side by side. Tungavidya began to chant mantra of marriage, and others began to do kirtan of marriage ceremony. और सब सखियां मैरिज की विवाह का कीर्तन करने लगी. And Srimati Radhika himself took the bell of Srimati Lalita and she binded in the Pitambar of Krishna. At the same time, Vishakha brought Sindhu, you know, Sindhu, and gave in the hands of Krishna. And she told something in the ear of Krishna that take this Sindhu and give in the Lalita's head. So, when Sri Krishna began to give Sindhu in his head, forehead, Lalita was at that time understood, no, they are playing some naughty things. She began to run from there, but she was binded with Krishna Pitambar. She could not. So, thus marriage was done, Gopi is done, Tungavidya being priest, and Chitra, she painted the feet of Radhika, Lalita here. So some color was filled on this stone. Even we can see when we pour water there, very distinct that chinha, sign will come out. It is not newly built. It may be that it was somewhat repaired, but Vajranabh had built this sign that here Lalita marriage was done, but not actual marriage. Gandharva Vivah, marriage Gandharva, marriage was done here. And all gopis were so happy and they were singing so many kinds of Lalita Sakhira, Anu Ajogya Kinkari, Anuga Kinkari, Vinod Dhari. Lalita is so brave, Nirbhi, bold and outspoken. Hard spoken. Hard spoken. Prakhara. Dhurte Brajanda Tane Tanushushtu Bamyam Ma Dakshina Bhav Kalankili Lakhavaya Radhe Sunugira Hitam iti Shikshayanti Deving Gunaishu Lalitan. You should know, not one thing. Krishna name is himself Krishna. It is right. But bhakti, bhakta sangena parijayate. Bhagavad bhakti, bhakti stu bhagavad sangena. If you are chanting name, not one life, lakhs and lakhs life, you can chant Hari name.
her name will not manifest here. Never, never and never. Bhagavat Bhakta Sangena Paryayate. Krishna can come when bhaktas are there and we are in their guidance. Otherwise not. We are hearing, chanting, remembering Krishna, doing all things. But if we are not in sadhu sangha, it is not bhakti, it is karmanga. इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चे नवलक्षणा क्रिएत भगवती अध्यात्म मन अधीत प्रहलाद महाराज जी से that if you are chanting, remembering, doing archan, bandhan, dasya, sakshat, manvedan, like Duryodhan, he was doing so. Ravana korchilo. Chaturvedya, he was knowing everything. But Krishna will not come there. Krishna name will not manifest here. We cannot realize anything. Also our all acharyas has told, कोटि कोटि जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रबोधम. कोटि कोटि जन्म. So if anyone is telling that simply only by doing kirtan we will achieve highest goal, Krishna Prem, it is absurd and it is against Siddhant. You should remember all this. From where you will have name? Who will give you name? Guru and Vaishnava. And without Guru and Vaishnava, you are doing, only it may be that sin may go. You can go out of death and birth. It may be. But not Krishna. You cannot go to Vaikuntha even, but to tell Braja. You cannot go. Our heart will not be purified by Krishna name if we are not in sadhu sangha. And this name has not been given by any bona fide guru. Then it will be chance of so much doing offenses and offenses. So koti janme yadi kare shravana kirtan tabu to na paye pade premata. So Rupa Goswami is telling that being in Vrindavan, tadanuragi jananugami kalam nayeda akhilam ityupadesha saram. Be always in the guidance of anuragi, tadanugami, jananugami. Without this Krishna name will not be as a rush. Indeed, Krishna is Akhil Rasami Sindhu. But when we will chant, remember and do bhakti in the guidance and with bhakta, premi bhakta, then Krishna will manifest as a rasa. Otherwise not. Krishna has told, I am not a swatantra. I am not independent. I am what? Dependent. I am dependent. To whom? If भक्त will बेच देंगे हमें तो हम बिक जाऊंगा. If Bhakt wants to sell me, I will be sold. If Bhakt will sell me, I will be sold. हम भक्त पराधी ना. So anyone chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, then it will be Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Are you all with my opinion one? Yes. Don't listen that only by chanting Krishna name. It is in the Krishna. Always remember this in your heart. ठीक है.
So always try to be like to. Lalita Sakhira Anuga Kinkari. Vinod Dhari Chapai. Bhakti Vinod Thakare himself telling. Lalita Sakhira Ajogya Anuga. Anuga Kinkari. And when we will tell for us, then Ajogya Kinkari. No? Anuga Kinkari. Then Krishna, Srimati Radhika will come. Krishna is telling Radhe, Radhe. And Radhe is telling Krishna, Krishna. No? Krishna is telling Radhe, Radhe. Radhe, Radhe, je kare sei Mahasaya. They are Mahasaya. और बिना राधिका जी का नाम कृष्ण, हरे कृष्ण में पहले राधा जी का नाम है तब कृष्ण का नाम है. Understand? In Hare Krishna name, first name is of Radhika, Hare, who harati manah Krishna, Hari harati manah. So Srimati Radhika is controlling the heart and mind of Krishna, so she is Hara, and from Hare it has become. So Radha Krishna, not Krishna Radha. So we have come here, this place, this is called Sakhi Gari. Srimati Lalita with all his Sakhis used to play on the top of these hills. At that time it was so beautiful, so beautiful. There are some places here, the pieces of stones that the rays of sun coming to them and is become like so much glittering, so much. They used to play with there. There are some stones like katori ke saman, bubbles. So many at a time, at a place. They used to give something and to and call Krishna, that you can taste here. So many preparations they used to do. There are so many places where they used to play with all the gopis and also with Krishna. So this is Parvati is called Sakhigiri. You should know one thing more, special. Jah kamapi rajukule vishubhanujaya sapaksha preksha padamim anuruddhyamana sabdas tadah dadauna sabdas ist ghatane tritarthamani deving gunaisu lalita lalitang naman jah kamapi rajukule vishubhanujaya jah Vishubhanu Kule Utpanna Srimati Vishubhanu Nandini has come in the dynasty of Vishubhanu Maharaj, his daughter. If anyone taking the shelter of Lalita, I want to be in the group of Srimati Radhika, in the youth of Radhika. If Lalita will have a scent of that thing, smell of that, that anyone coming in his brush, especially in the playground of Lalita, birthplace of Radhika, and once that I want to be in the Lalita Gun and Radha youth, and being in the school of Rup Manjari and Ananga Manjari, two teachers, then at once Lalita will be so happy. And not seeing any qualification, at once she will fulfill this desire. She wants that if anyone does a desire like this, I want to serve Lalita, being in the school of Rup Manjari and Ananga Manjari,
in the gun of Lalita and in the youth of, at once she will fulfill. Why she can? She has controlled Radha and Krishna both. If Srimati Lalita is telling to Radhika, don't meet with black person, he will cheat you. Dhurte prajandatane tanusustu bamyam ma dakshina bhava kalanki lilag. Don't follow Krishna. He should follow you. Why you should go going for? तुम क्यों जा रही हो उनके पीछे पीछे? वो तुम्हारे पीछे पीछे फॉलो करेंगे. उससे मत बोलो, बातचीत मत करो. Don't talk with him. He wants to talk, but he wants to control you, but you should not be in control of Krishna. Like this. Oh, don't see towards Krishna. Radhika wants to see towards Krishna. Krishna is coming, and he is telling that if you will not speak, I will go away. And Lalita is there. Don't see towards him. Don't talk. She is willing to do, but yet by the fear of Lalita she cannot do. And if Krishna comes nearer to Radhika, then he chastise Krishna. Don't come here. Why? Because he loves Krishna and Radhika with koti pran. Mukunda, Radha Mukunda. Uttam Sahaj Vishesh Prasad Pragalbham Devi. By Seva, by Prem Seva, any can have controlling power. तब ऐसा हो सकती है प्रगल्भ. बिना सेवा के नहीं. दोनों को अपनी सेवा से अपनी कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक राधा और कृष्ण पर अपने प्राणों को समर्पित कर रखी है. इसलिए आज हम लोग ललिता जी के चरणों में आए हैं. विशेष करके यहाँ पर उनके विवाह के स्थल में आज बड़ी प्रसन्न होंगी. इसलिए आज उनसे जो कुछ मांगेगा दे देंगी. तो हम लोग भी आज जिद कर लिए हैं कि वही मांगेंगे. ये आपके ही गण में रहेंगे, हम दूसरी जगह नहीं, और कोई भी चीज हम नहीं चाहते हैं. यदि ऐसी भावना होगी तो जरूर कृष्ण दे देंगे. इसमें किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं. बस लोभ ही एक कारण है. लोभ का कोई मापदंड नहीं. लोभ अधिकार और योग्यता नहीं देखता. ग्रीड नेवर सीज टुवर्ड्स क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी. कृष्ण किस पर कृपा करेंगे? नहीं करेंगे. तुम अधिकारी नहीं है जो तुम कहेगा, वो जिस पर कर दें. राधा जी किस पर प्रसन्न हो जाएंगी? बिल्व मंगल जैसे बदमाश आदमी के ऊपर में हो जाएंगी और उसे कितना उन्नत बना करके विश्व का वंदनीय बना देंगी. तुम इसके ऊपर में तुम्हारा क्वालिफिकेशन और योग्यता उस पर कोई काम नहीं करेगा. समझ रहा? What I told. Maharaj is saying that where Krishna and Radha Rani will send their shower their mercy, it does not depend upon your statement that either you are qualified or not. If they are ready to give their mercy, then qualification has no place. Billu Mangal. When Krishna can give mercy to a innocent person. No, Maharaj says scoundrel like Bill Mangal. Yes. And he has made him so high, so advanced that whole world is now worshipping him. Then why can't he give shower mercy on any other scoundrel? Why not to us? Whether we are qualified or not, we want this thing. This is qualification. ये लोभ ही उसका कारण है. जगत के लोग हजार कहें, मत कान से सुनो, कान में रुई दे करके रख लो. Keep some cotton in your, don't hear all. Then qualification आएगा तब वो कृपा करेंगे. नहीं, उनकी कृपा का कोई मापदंड नहीं है. कोई भी कुछ कंट्रोल करने वाला नहीं. और जिस पर तिस पर अहेतु करुणाशाली वो है. क्या? Maharaj is saying that if anyone is saying that first qualification will come and then you will get it, don't listen it. Put cotton on your ear. There is no measurement of Krishna's mercy. It comes without any measurement and qualification. That is why it is God this mercy. उनकी कृपा का तो यही बहादुरी है.
causeless merciful है. This is the characteristic of Zen mercy, that it is causeless mercy. Mercy. Why we will go bother and worry for that? Go Brahma. Those who can walk